गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा इंजन मार्केट्स का फर्स्ट वेबिनार है ये मंथ का। ये हिंदी में होगा। एज यू नो हम लोग लास्ट 3 to 4 मंथ से फर्स्ट वीक वेबिनार हिंदी में करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनालाइजिंग यंग फंड। हमारे से हमारे पास एक प्रीवियस वेबिनार में रिक्वेस्ट आई थी कि हमें बताइए कि आप कैसे यंग फंड फिल्टर कर सकते हैं और कैसे आप उसके ऊपर एनालिसिस रन कर सकते हो। तो आज के हमारे वेबिनार में हम देखेंगे कि कैसे आप क्वेरी टैब यूज़ कर सकते हो और यंग फंड्स को फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा, आप वो यंग फंड्स को कोई भी बेंचमार्क के साथ कंपेयर कर सकते हो। और तीसरा, हम देखेंगे रिस्क वर्सेस रिटर्न, वही सब फंड्स का, यंग फंड्स का, एंड ड्रॉ डाउन एनालिसिस। और फोर्थ में हम देखेंगे कि आप जो भी आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू द वेबिनार और एनी क्वेश्चंस, आपके लिए ओपन हो जाएगा फोरम। आप वहाँ पे अनम्यूट करके अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लेट्स गेट बैक टू इंजन मार्केट्स। हम अभी इंजन मार्केट्स के पास जाते हैं। एज यू नो, आप जैसे ही लॉग इन करते हो इंजन मार्केट्स पे, सबसे पहला टैब आपका ये इंजन मार्केट्स का मार्केट सेक्शन ओपन होता है, ये वाला। अभी जैसे हमारा मोटिव है टू फिल्टर यंग फंड्स। फंड्स फिल्टर करने के लिए, एज यू नो, हमारे पास एक टैब है फंड्स का, जहाँ पे आप फंड्स को फिल्टर कर सकते हो। आप जैसे ही फंड सेक्शन पे क्लिक करोगे, आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीनिंग का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन ये स्क्रीनिंग का इशू ये है कि यहाँ पे सिर्फ मिनिमम एज का ऑप्शन लगता है। अगर आपको कोई रेंज चाहिए, जैसे आपको ऐसे फंड चाहिए जो विद इन 2 इयर्स या 3 इयर्स के बीच में लॉन्च हुए हो, वो आप यहाँ पे एक रेंज नहीं डाल सकते। इसके लिए, यही चीज़ को हमने ओवरकम करने के लिए हमने क्वेरी टैब यहाँ पे बिल्ड किया है। क्वेरी टैब पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे क्वेरी टैब में आप अपने कंडीशंस के हिसाब से फंड फिल्टर कर सकते हो। अभी के लिए जैसे मेरा मोटिव है कि मुझे इक्विटी एसेट क्लास में से यंग फंड्स ढूंढना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ क्वेरी टैब में और यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट स्टैटिस्टिक फिल्टर्स। आप यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक फिल्टर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फंड नेम पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए एक ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे इक्विटी क्लास सिलेक्ट करता हूँ, एसेट क्लास। आप देख सकते हैं दैट इज एग्जैक्टली इक्विटी में सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देखिए हमने एक कंडीशन बनाया। कंडीशन बनाने के बाद आपको यहाँ पे ऐड कंडीशन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो एसेट क्लास इज एग्जैक्टली इक्विटी। तो अभी हमारे पास 890 फंड्स है जो इक्विटी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें एक लॉन्च डेट के बेसिस पे फंड ढूंढना है। तो हमारे पास यही सिलेक्ट स्टैटिस्टिक फिल्टर में एक ऑप्शन आता है जिसको हम लॉन्च डेट बोलते हैं। तो आप ये लॉन्च डेट को यूज कर सकते हो और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आप देखिए ये लॉन्च डेट जैसे मैंने सिलेक्ट किया, इसमें मीन एंड मैक्स आ जा रहा है डेटा सेट का। राइट। तो इसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 2021, मतलब 24 अक्टूबर 2021 से लेके 3 अप्रैल 2020, अप्रैल 23 तक जो भी फंड्स लॉन्च हुए हो विद इन एसेट क्लास ऑफ इक्विटी, वो मुझे मिले। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देख पा रहे हो 128 फंड्स यहाँ पे फाउंड हुए। तो मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है शो 128 फंड्स पे। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, आप देख पा रहे हो हमारे पास सभी फंड्स जो ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, यानी 21 से 2023 के बीच में लॉन्च हुए थे, वो सब यहाँ पे आ गए। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे आप ये चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे सभी कैटेगरीज हमारे पास आ गए। इवन इवन द सेक्टोरियल, इक्विटी इंडाइसेस, ईटीएफ, तो सब आ गए। अभी स्पेसिफिकली मुझे 3 कैटेगरीज चाहिए: मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप एंड वैल्यू। मुझे यही फिल्टर्स फंड चाहिए, यही कैटेगरीज के फंड चाहिए मुझे अभी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एडवांस क्वेरी में बिल्ड करता हूँ। एडवांस क्वेरी बिल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे सेबी कैटेगरी पे सिलेक्ट करता हूँ। मैं जैसे ही सेबी कैटेगरी पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास, दैट इज एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पहले देखता हूँ, मैं वैल्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं जैसे ही वैल्यू पे क्लिक करूंगा, इसको ऐड कंडीशन में मैं क्लिक करता हूँ। आप देख पा रहे हो 1 फंड फाउंड हुआ है वैल्यू की बेसिस पे। इसके बाद मुझे एक और कैटेगरी डालना है, यानी कि मैं यहाँ पे मल्टी कैप भी डाल देता हूँ। मैंने मल्टी कैप ऐड कंडीशन किया, आप देख सकते हो 0 फंड फाइंड हो रहा है। तो बेसिकली इसमें हमने एंड का ऑपरेटर यूज किया है। तो ऐसे कोई भी फंड्स नहीं है जो इक्विटी क्लास को बिलोंग करे और ये डेट पे लॉन्च हुए हो, और प्लस वो दोनों फंड्स, वो जो फंड्स हैं वो वैल्यू और मल्टी दोनों के अंदर आए। तो ऐसे कोई फंड्स होते नहीं है जो दोनों कैटेगरीज को बिलोंग करे। मैं इसमें एक वैल्यू भी ऐड करके एक प्रॉपर कंडीशनल फॉर्मेट में बना देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एंड ऑपरेटर्स है यहाँ पे। तो हम ये ऑपरेटर्स को चेंज करेंगे। अभी ऑपरेटर्स चेंज करने का बेसिक मीनिंग ये हो जाता है, एंड का मतलब होता है कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। और का मतलब होता है कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। अगर आप देख पाओगे, मैंने ये जो क्वेरी बनाया इसमें 0 फंड्स आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे कोई फंड्स ही नहीं है जो
तीनों कैटेगरी को बिलोंग करते हो और इस डेट में लॉन्च होते हुए हो। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और कंडीशन को सिलेक्ट करता हूँ, और कंडीशन सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट्स देख सकते हो। तो ब्रैकेट्स बेसिकली इसलिए दिया जिससे आप एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक सिंगल लाइन में ला पाओ। सो जैसे मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट्स को रिमूव कर दे रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हो हमारे पास यहाँ पे टोटल 10 फंड्स आ रहे हैं डायरेक्टली इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, 2021 से 2023 में। तो आप देख सकते हो सभी फंड्स यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ और फ्लेक्सी कैप भी ऐड कर देता हूँ डायरेक्टली यहीं पे, और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, और करके हमारे पास 17 फंड्स एक्चुअली आ रहे हैं जो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप एंड वैल्यू कैप सब लाइक वैल्यू फंड्स को बिलोंग करते हो यहाँ पे। जैसे आप कैटेगरी देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे ये ब्रैकेट्स रिमूव करना है, और ब्रैकेट्स रिमूव करने का मीनिंग ये हो जाता है कि आप इसको एक पर्टिकुलर सिंगल कंडीशन के अंदर इनपुट कर रहे हो। और ये और ऑपरेटर जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी एक स्टेटमेंट से एक ट्रू होना चाहिए, तो ये और स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। सो इस तरीके से आप एक एडवांस क्वेरी बिल्ड कर सकते हो, और देख सकते हो हमने ये लॉन्च डेट के बेसिस पे फंड फाइंड आउट कर लिया है जो कि 21 से 2023 के बीच में लॉन्च हुए हो, राइट। सो इसी तरीके से आप अपने फंड्स फिल्टर कर सकते हो, और फंड्स फिल्टर करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन देख पाओगे ऐड फंड्स टू कंपेयर। सो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे हमारे जितने भी फंड्स हैं वो कंपेयर सेक्शन में मूव हो जाएंगे, या फिर आप इस डेटा को एक्सेल के अंदर भी डंप ले सकते हो यहीं से। इसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हो, रीसेट क्वेरी, सेव दिस क्वेरी, लोड दिस क्वेरी। सो आप यहाँ पे Sir, सेव can दिस you क्वेरी please करके, talk in English, sir? Ma'am, sorry, but this is a Hindi webinar. I'm so sorry. This is a this is the first webinar of the month, so that's the reason. Oh, is this a Hindi one? Sorry, Yeah, I didn't know that. yeah, Thank you. yeah, yeah. So can you enlarge your screen? Actually, your screen is a bit slow. There is a two slides which is coming. Can you enlarge your screen, please? Yeah. No, again, there is a dual screen which we can see. It is better we can see your only this main screen. Uh, Sir, hi. If you could maybe try to rejoin again because none of us from our team is facing this issue. So if you could just try to rejoin and see if you're facing the same issue or not, because we are just able to see only one screen that way. Yes, Rohan, आप कंटिन्यू कर सकते हो. यस यस। सो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, आप कंपेयर सेक्शन में क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके जितने भी फंड्स हैं वो यहाँ पे लोड हो जाएंगे डायरेक्टली इन दिस सेक्शन। सो आप देख सकते हो हमारे पास सभी लॉन्च फंड के बेसिस पे, यानी जो भी हमने लॉन्च डेट डाला था 21 से 2023, उसके बेसिस पे हमारे सब फंड्स आ गए यहाँ पे। और आप यहाँ पे एज देख सकते हो। सो आप यहाँ पे जितने भी फंड्स हैं वो हमने थ्रू क्वेरी टैब यहाँ पे लिया है, और अगर आपको इन सब फंड्स को कंपेयर करना है विथ एनी इंडाइसिस, सो एज यू नो अभी हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज है, मल्टी फ्लेक्सी वैल्यू। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इंडाइसिस ऐड करता हूँ, निफ्टी 50 फॉर एग्जाम्पल। सो एक ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस ले रहा हूं मैं फॉर एवरी फंड इन दिस पर्टिकुलर टैब, और एक ले लेता हूं निफ्टी 500। सो आई कैन, मैंने यहाँ पे निफ्टी 500 पुट कर दिया है, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो आप सी ए जी आर, स्टैंडर्ड डिविएशन, साप, सॉटिनो, वी ए आर, ये जो आप डेटा देख रहे हो इज फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द फंड। सो ये जो क्यूमुलेटिव एक्सेस है जो आपको बताता है एब्सोल्यूट रिटर्न ओवर द बेंचमार्क, सॉरी एब्सोल्यूट रिटर्न जो आपको बताता है क्यूमुलेटिव एक्सेस और क्यूमुलेटिव रिटर्न। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लैंक है, अगर आपको इसको फिल करना है तो आपको एक सिंगल स्टार्ट डेट लेना पड़ेगा सभी फंड्स के लिए। सो राइट नाउ आप देख सकते हो सभी फंड्स का यहाँ पे एज डिफरेंट है, और इनका सी ए जी आर भी टोटली डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे। सो इसके लिए आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ सी ए जी आर, स्टैंडर्ड डिविएशन। सो इसके लिए हम यहाँ पे एक सिंगल स्टार्ट डेट ले रहे फॉर ऑल द फंड्स जो हमारे लिस्ट में। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2023 3 अप्रैल से लेके अभी तक। सो हमारे पास स्टार्ट डेट का ऑप्शन है, एंड डेट डिफॉल्टली वो कल का क्लोजिंग लेगा। सो आप यहाँ पे जैसे ही इस सेटिंग बटन पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो सी यू एम जो क्यूमुलेटिव रिटर्न का कॉलम था वो फिल हो गया है, जो आपको बता रहा है एब्सोल्यूट रिटर्न फ्रॉम द टाइम फ्रेम जो हमने सिलेक्ट किया उसने कितना जनरेट किया, एज वेल एज द सी ए जी आर, स्टैंडर्ड डिवीजन। सो सी ए जी आर आपको बताता है एनुअल ग्रोथ रेट, यानी एवरी ईयर के बेसिकली ईयर ऑन ईयर बेसिस कितना रिटर्न आपको दिया है इस पर्टिकुलर फंड ने, एज वेल एज द स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी इसने कितनी वोलेटिलिटी फेस की थी विद इन दिस विद इन टू ईयर्स ऑफ टाइम। सो ये आप सॉर्ट करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको सॉर्ट करता हूँ सी ए जी आर को, तो आप देख सकते हो ये जितने भी फंड्स है जो निफ्टी 500 के ऊपर आ रहे हैं, राइट, इन्होंने अपने निफ्टी 500 जो
इंडेक्स है उसको बीट किया इन टर्म्स ऑफ सी ए जी आर एज वेल एज द जो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निफ्टी 500 का है वो 13.19 है। और आप यहाँ पे सॉर्ट करके इसको भी देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर लिस्ट में से कौन सा फंड सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल था, राइट और उसको आप चेकआउट कर सकते हो। लाइक कौन सा फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न भी दे रहा था, तो आप जैसे मैं सी जी आर पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो एक्सिस कॉन्ट एच एस बी सी इन्होंने सबसे अच्छा सी जी आर रिटर्न जनरेट किया इन विद इन 2 years ऑफ टाइम एज वेल एज द स्टैंडर्ड डिवीएशन। सो स्टैंडर्ड आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज को कंपेयर कर सकते हो एज वेल आप शार्प भी देख सकते हो। शार्प कभी भी 1 के ऊपर होना चाहिए, हायर द बेटर। सो शार्प आपको बताता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कि आपका जो फंड है वो कितना अच्छे से रिस्क मैनेज कर रहा है प्लस आपको कितना अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो मैं अगर शार्प के बेसिस पे सॉर्ट करूं तो आप देख सकते हो एक्सिस मल्टी एंड एस बी आई हैज द गुड शार्प रेशियो, राइट। और वहीं पे अगर आप नीचे चले जाओगे सैमको का सबसे नेगेटिव शार्प में ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है आपके पास, सैमको एंड टाटा। सो ये जितने भी फंड्स है वो अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाए, यानी जो इंडेक्स है निफ्टी 550 उनको बीट नहीं कर पाए इन टर्म्स ऑफ शार्प रेशियो, राइट। सो आफ्टर दिस इफ यू वांट टू लाइक आपको देखना है पर्टिकुलरली कैलेंडर वाइज रिटर्न इन सभी फंड्स का, सो आप यहाँ पे यही सब फंड्स का कैलेंडर वाइज रिटर्न्स भी देख सकते हो। आपको यहाँ पे जाना है कैलेंडर ईयर्स। सो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे जो भी लिस्ट ऑफ फंड्स हमने देखा था मेन लिस्ट में वो यहाँ पे आ जाएगा। सो जो भी हमने इंडाइसेस ऐड किए थे उसका कैलेंडर वाइज रिटर्न आपको यहाँ पे मिलता है फ्रॉम दिसंबर टू जैन। सो जैसे आप देख सकते हो 2024 यानी जैन टू दिसंबर 2024 में सबसे अच्छा रिटर्न इन्वेस्को एंड एल आई सी एम एफ मल्टी कैप ने दिया है आपको इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। और सबसे कम दिया है सैमको, देन कम्स निफ्टी 50 एंड देन कम्स टाटा मल्टी कैप फंड जहाँ पे उन्होंने 12% का रिटर्न टाटा ने दिया है। सो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो ऑन बेसिस ऑफ कैलेंडर वाइज रिटर्न। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2023 में हम देख सकते हैं कि एच एस बी सी एंड आई टी आई ने सबसे अच्छा रिटर्न हमको जनरेट किया और वहीं पे निफ्टी 50 एंड एस बी आई मल्टी कैप ने सबसे कम रिटर्न जनरेट किया है विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 2023। अगर आपको ये डेटा एक्सेल में लेना है तो आप इस डेटा को एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो यहीं से। ये अभी हमने देखा कैलेंडर वाइज रिटर्न, सो कैलेंडर ईयर्स। उसके बाद हम देखेंगे कैलेंडर मंथ्स। सो जैसे हमने ईयर वाइज देखा वैसे ही आप यहाँ पे मंथ वाइज भी देख सकते हो। तो आप जैसे ही मंथ वाइज पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे लास्ट 24 मंथ्स का रिटर्न आपको मिलेगा, मंथली रिटर्न्स। सो आप यहाँ पे सॉर्ट करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल दिसंबर 2024 में आप देख सकते हो सैमको एंड इन्वेस्को ने अच्छा खासा रिटर्न या 1.67%, इन्वेस्को ने 1.56% का रिटर्न हमको जनरेट किया इन दिसंबर 2024। वहीं पे अगर मैं सॉर्ट करूँ इन टर्म्स ऑफ फैब 2025 तो आप देख सकते हो सैमको सबसे ज़्यादा फॉल हुआ है और सेकंड एल आई सी एम एफ सबसे ज़्यादा फॉल हुआ है यहाँ पे, और सबसे कम फॉल हुआ था निफ्टी 50 एंड सुंदरम फ्लेक्सी कैप। सो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो लास्ट 24 मंथ्स का डेटा आप यहाँ पे ले सकते हो। और वहीं पे अगर आपको चार्ट व्यू चाहिए तो आपको यहाँ पे चार्ट व्यू भी मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है जिससे आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा फॉर लास्ट 24 मंथ्स। और आप यहाँ पे होर करके देख सकते हो कि सब फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है विद इन डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स। और यहाँ पे आप एवरेज जो इस पर्टिकुलर 2 years का एवरेज रिटर्न आपको जो दिखा रहा है ये पर्टिकुलर कॉन्ट वैल्यू ने जनरेट किया है, ये बेस्ट रिटर्न विद इन 2 years एंड द वर्स्ट रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद अगर आपको ये डेटा एक्सेल में चाहिए तो आप ये डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो इन एक्सेल एज वेल। ये होता है हमारा कैलेंडर ईयर्स एंड देन कम्स द कैलेंडर मंथ्स। तो ये दोनों हमने यहाँ पे कवर किया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो यंग फंड्स है वो अपने लॉसेस को कितनी जल्दी रिकवर करते हैं। सो उसके लिए हमारे पास एक टैब है कॉल्ड ड्रॉडाउन। सो आप यहाँ पे ड्रॉडाउन पे क्लिक कर सकते हो और आप जैसे ही ड्रॉडाउन पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो जो स्टार्ट डेट है वो लिया है मार्च 2023। सो प्लीज नोट जो भी हमारे फंड्स यंग फंड्स हैं हमारे लिस्ट में उसका वो स्टार्ट डेट कैप्चर कर रहे हैं इन ड्रॉडाउन। सो बेसिकली हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि सभी फंड्स को एक सिंगल पॉइंट से एनालाइज कर पाए हम। सो इसके लिए हम यंग फंड्स का डेटा लेते हैं बिकॉज बाकी फंड्स का जो यंग फंड्स है उनका बैक टेस्टिंग का डेटा नहीं है, वो डेटा लैगार्ड है। सो इसके लिए आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो टाइमिंग। सो मैं यहाँ पे यंग फंड का डेट ले लेता हूँ जो डिफॉल्ट सेट हो गया है 6 मार्च 2023। और यहाँ पे हम आपको वर्स्ट 5 लॉसेस दिखाएंगे विद इन द टाइम फ्रेम, यानी 2023 से लेके टिल डेट अप्रैल 2025 तक का क्या हमारा वर्स्ट 5 लॉसेस था विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ द फंड। सो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो लाइक बंधन मल्टी कैप की तरफ यहाँ पे। और आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ग्राफ लाइक आइकन में आप देख सकते हो वर्स्ट 5 लॉसेस यहाँ पे आ रहे हैं हमारे सिस्टम में, जो कि आपको बता रहा है कि सेकेंड वर्स्ट
जो फॉल था वो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 11 सितंबर 2023। सो जो स्टार्ट प्राइस था वो था 12.81, जो गिरा 12.81 से 12.1111, राइट। और वापस 12.1111 से 12.811 आने के लिए उसने 18 डेज लिया, यानी 18 डेज लिया टू रिकवर नेगेटिव 5% ऑफ रिटर्न, राइट। सो उसने 18 डेज में रिकवर किया एंड दिस वाज द रिकवरी डेट। सो आप ये भी देख सकते हो कि अभी जो रिसेंट मार्केट फॉल हुआ था फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च, सो ये स्टिल गोइंग ऑन है, यानी ये फंड अभी तक रिकवर कर रहा है। जहां पे हमारा जो नैव है वो 18 से 14 तक गिरा है ऑलमोस्ट, और उसके बाद 14 से 18 पे आने के लिए आप देख सकते हो 28% उसने अभी तक रिकवर किया है एंड द रिकवरी स्टिल गोइंग ऑन। सो हम आपको ये भी प्रॉम देंगे, प्लस अगर आप देखोगे कि ये फंड का ये वर्स्ट लॉस है जो उसने फेस किया है विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 2023 टिल डेट, यानी 2 साल में इसका ये वर्स्ट लॉस उसने फेस किया नेगेटिव 18%, और जो सेकंड वर्स्ट लॉस था वो नेगेटिव 5% था। यानी आप अभी बेसिकली ये कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज इनके पास बैक टेस्टिंग का डेटा है नहीं, कोविड का भी डेटा इनके पास है नहीं, क्यों, बिकॉज ये यंग फंड्स है। सो आप इसमें एक डिसीजन नहीं ले सकते कि बेसिकली ये टाइम कितना लेगा रिकवर करने के लिए, बिकॉज बाकी जितने भी वर्स्ट लॉसेज है उसने ऑलमोस्ट 18 3 ऑलमोस्ट 20 डेज से कम में उसने रिकवर किया है। लेकिन इसका कितना टाइम लगेगा वी कांट प्रेडिक्ट, बिकॉज इस लेवल का लॉस अभी तक हम इस फंड ने कभी देखा नहीं है, ना हमारे पास डेटा है टू कंपेयर इट विद। सो ये होता है हमारा ड्रॉडाउन एनालिसिस फॉर इंडिविजुअल फंड। वैसे ही आप यहाँ पे जो ग्राफ देख पा रहे हो, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो पर्टिकुलरली वर्स्ट ड्रॉडाउन्स, आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो साइज, तो साइज सेकंड वर्स्ट साइज सबसे ज्यादा था क्वांट का, और सबसे कम था देख सकते हो एसबीआई मल्टी कैप का। सो जो लेंथ है, लेंथ आपको बताता है कितने दिन तक ये लॉस चल रहा था, यानी इस पर्टिकुलर फंड एसबीआई ने नेगेटिव 4% का लॉस बुक करने में 45 डेज लिया, यानी 45 डेज तक हमारा नाव गिर रहा था, और उसके बाद 21 डेज लिया उसने रिकवर करने के लिए। तो आप जैसे क्लिक करोगे रिकवरी पे तो आप देख सकते हो सबसे जल्दी कौन सा फंड रिकवर हुआ है, एक्सिस एंड एचडीएफसी सबसे जल्दी रिकवर हुआ है फ्रॉम द ड्रॉडाउन, सेकंड वर्स्ट ड्रॉडाउन विद इन द पीरियड। और आप इसी तरीके से वर्स्ट 5 ड्रॉडाउन्स को कंपेयर कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन से फंड कितने जल्दी रिकवर करते फ्रॉम द वर्स्ट ड्रॉडाउन। सो ये था हमारे यंग फंड्स का ड्रॉडाउन। एज यू नो डेटा लिमिटेड है हमारे पास, क्योंकि ये जो फंड्स है हमारे पास सिर्फ 2 या 3 इयर्स का एनालिसिस है, अब डेटा है हमारे पास, तो उसके बेसिस पे हम एनालाइज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फंड्स को। इसके बाद आपको देखना है पर्टिकुलरली रिस्क वर्सेस रिटर्न विद इन द टाइम फ्रेम, ये सब फंड्स ने कितना किया था। तो आप जैसे रिस्क वर्सेस रिटर्न पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टू चेंज द स्टार्ट डेट। सो आप यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड डेट सेट कर सकते हो। सो डिफॉल्ट जैसे मैंने आपको बताया यंग फंड्स का हम स्टार्ट डेट यहाँ पे कैप्चर करते हैं। सो यंग फंड का डेट इसने कैप्चर किया है फ्रॉम 2023 टिल 2025। ये सब फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न कैसा था, यानी हमारे पास यहाँ पे एक स्कैटर प्लॉट आ रहा है जिसमें 4 क्वाड्रेंट है, लो रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क लो रिटर्न एंड लो रिस्क लो रिटर्न। और वाई एक्सेस में आप देख सकते हो एनुअलाइज रिटर्न है, एक्स एक्सेस में एनुअलाइज रिस्क है स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी हमारा जो एनुअलाइज रिस्क है वो बेसिकली स्टैंडर्ड डिवीजन हम यहाँ पे कैप्चर करते हैं। और आप यहाँ पे होवर कर सकते हो कोई भी एक पर्टिकुलर फंड में और देख सकते हो फंड कौन से क्वाड्रेंट में फॉल हो रहा है, प्लस वो कितना रिस्क एंड कितना रिटर्न आपको जनरेट करके दे रहा है विद इन द टाइम फ्रेम। सो आप यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, जो भी आपको टाइम फ्रेम लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2024 फर्स्ट मार्च से ही ले लेता हूँ, और ये ऑलमोस्ट 1 ईयर का रिस्क एंड रिटर्न का स्कैटर प्लॉट है जहां पे आप देख सकते हो एसबीआई मल्टी कैप लो रिस्क हाई रिटर्न क्वाड्रेंट की तरफ आ रहा है, और वहीं पे कॉन्ट ऑलमोस्ट सेंटर में आ रहा है हाई रिस्क हाई रिटर्न एंड हाई रिस्क लो रिटर्न के क्वाड्रेंट में, जहां पे वो रिस्क ऑलमोस्ट 20% का लिया, रिटर्न आपको नेगेटिव में दे रहा है वो लास्ट 1 ईयर में। इसके बेसिस पे आप अपने क्लाइंट का रिस्क एंड रिटर्न आप चेकआउट कर फंड का रिस्क एंड रिटर्न आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे होर कर सकते हो। और आप जैसे देख सकते हो जो भी हमने इंडेक्स ऐड किया था वो भी यहाँ पे एडेड है, निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500। अगर आपको ये डेटा लेबल चेंज करना है तो आप इसको निकाल भी सकते हो, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है जिससे आप यहाँ पे होर करके उसको रीड आउट कर सकते हो, जिससे ईजी हो जाता है आपका रीड करने का। उसके बाद आप यहाँ पे इसको जूम भी कर सकते हो अकॉर्डिंगली, जैसे आपको अगर इसको जूम करना है तो आप इसको ड्रैग एंड जूम कर सकते हो इस तरीके से, और इसको जूम में भी व्यू कर सकते हो रिस्क वर्सेस रिटर्न टैब को। ये होता है हमारा रिस्क वर्सेस रिटर्न। इसमें आपको हेल्प करता है लाइक अंडरस्टैंड करने में कि कौन सा फंड कितना रिस्क एंड कितना रिटर्न दे रहा है एज पर योर क्लाइंट नीड। आप अपने क्लाइंट को एक अच्छा फंड रिकमेंड कर सकते हो ऑन बेसिस ऑफ देयर रिस्क एपेटाइट। इसके बाद हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस। सो पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस में आप यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट पे क्लिक कर सकते हो,
और आप जैसे पॉइंट टू पॉइंट पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक 5 एडिटेबल डेट्स है, यानी आप इसको डेट चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ये मैंने डिफॉल्टली पहले से सेट करके रखा है। सो मैं इसे जैसे फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, ऑलमोस्ट 1 ईयर का एनालिसिस मैं ले लेता हूँ। सो मैं अप्रैल अप्रैल 1 से टिल 1 अप्रैल 2025 तक का मैं एनालिसिस लेता हूँ कि ये सब फंड्स ने कितना अच्छा हमको परफॉर्म करके दिया है। तो हमने यहाँ पे एक लमसम अमाउंट सिलेक्ट किया है, लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट विच इज़ 1 करोड़। और मैं इसको सॉर्ट करके देख सकता हूँ कि विद इन 1 ईयर ऑफ पीरियड किसने सबसे अच्छा रिटर्न हमको जनरेट किया है। जहाँ पे आप देख सकते हो SBI मल्टी कैप ने आपका 1 करोड़ जो इन्वेस्ट किया था वो 1 करोड़ 14 लाख हो चुका है। और वहीं पे सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग था सैमको, कॉन्ट एंड टाटा, जिसने आपका ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज 99 लैक्स के ऊपर लाके छोड़ दिया है, राइट, विद इन दिस 1 पीरियड ऑफ टाइम। सो ये जितने भी बकेट्स है वो एडिटेबल है, यानी आप इसको एडिट कर सकते हो। बेसिकली आपको ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस, जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप अपने क्लाइंट का डेटा रन कर सकते हो इजीली। इसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि हमने जो टाइम फ्रेम यहाँ पे लिया है फ्रॉम 2010 टिल 2025, ये ब्लैंक आ रहा है बिकॉज इन सभी फंड्स का डेटा है ही नहीं फ्रॉम 2010। ये रिसेंट एडेड फंड्स थे, यंग फंड्स थे, इसके लिए इसका डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर आपको इसका एक कंपैरिजन चार्ट डाउनलोड करना है, जैसे आप देख सकते हो मैंने इसको सॉर्ट किया है, आप इसको इसका एक कंपैरिजन चार्ट भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। तो ये जो कंपैरिजन चार्ट है आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपने क्लाइंट को डायरेक्टली भेज सकते हो, और बाकी सब जगह पीपीटीज एंड पीपीटीज में एडिट कर सकते हो इसको या ऐड कर सकते हो। सो आप इसी तरीके से 5 एडिटेबल बकेट्स का भी चार्ट डाउनलोड कर सकते हो शो कंपैरिजन चार्ट पे क्लिक करके। अगर आपको इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखना है, यानी CAGR एब्सोल्यूट, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे CAGR देख सकते हो, आप CAGR पे क्लिक करोगे तो ये 1 ईयर का CAGR आपको बता रहा है। तो CAGR आपको तभी यूज करना है जब आपका जो स्टार्ट एंड एंड डेट है वो अबव 1 ईयर, राइट। और वहीं पे अगर आप एब्सोल्यूट पे क्लिक करोगे, सो ये एब्सोल्यूट बेसिस पे बताता है अगर आपका टाइम फ्रेम विद इन 1 ईयर है, यानी 1 ईयर से नीचे है, कम है, तो आपको एब्सोल्यूट यूज करना है वहां पे। और आप इसका भी चार्ज देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं CAGR पे क्लिक करता हूँ और मैं इन टर्म्स ऑफ 1 जनवरी 2025 टिल 31 मार्च 2025 तक चेकआउट करता हूँ, तो आप देख सकते हो सैम को सबसे ज्यादा गिरा है, नेगेटिव -63%, और सबसे कम गिरा है Nifty 50 यहाँ पे। तो हमारा बेंचमार्क कंपैरेटिवली कम गिर रहा है कंपेयर टू अदर फंड्स हियर। इसके बाद अगर आपको इसका एक्सेल चाहिए तो आप ऑफ कोर्स इसका एक्सेल भी ले सकते हो, और यहाँ तक कि आप जो भी एनालिसिस किए हो ऑन दिस लॉन्च डे ऑन द यंगर फंड्स, आप इसका एक PPT भी जनरेट कर सकते हो यहाँ से। सो PPT का ऑप्शन आपको यहाँ पे टॉप पे मिलेगा, आप यहाँ पे PPT पे क्लिक कर सकते हो, इससे आपका एक PPT जनरेट हो जाएगा। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टैब रिमूव ऐड करना है तो पीपीटीज एडिटेबल होती है पूरी तरीके से, और आप हमारे सिस्टम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहीं से कोई भी पर्टिकुलर टैब का और उसको ऐड कर सकते हो इन द पीपीटी। तो जैसे कि हमने जो जो एनालिसिस किया था आप देख सकते हो एंजन मार्केट्स, यहाँ पे एंजन मार्केट्स के बदले आपका लोगो आएगा, एंड ये पूरा एनालिसिस आप अपने क्लाइंट को देख सकते हो। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आप देख सकते हो 19 है, और ये पूरा एनालिसिस आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो। ये था हमारा रिपोर्ट, यानी उन पर्टिकुलर TER प्राइस कितना है इन सब फंड्स का एंड देयर रिस्पेक्टिव इंडेक्स बेंचमार्क एज वेल। और यहाँ पे अगर आप नीचे चले जाओगे तो आपको यहाँ पे CAGR रिटर्न, स्टैंडर्ड डिवीजन, शार्प वो कितना फेस कर रहा है वो भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद रिस्क वर्सेस रिटर्न जो हमने देखा था पर्टिकुलरली इंजन मार्केट्स कंपेयर सेक्शन में, रिस्क वर्सेस रिटर्न, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे जा सकते हो और देख सकते हो होल्डिंग्स इन पर्टिकुलर फंड्स का कहाँ कहाँ होल्डिंग है, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप की तरफ। एंड देन कम्स द ओवरलैप। सो ये ओवरलैप टैब आपको बताता है कि कौन से दो फंड्स के बीच में स्टॉक ओवरलैप्स कितना है। सो ये आपको हमारे इंजन मार्केट्स पे ही मिल जाता है, इसका ही हमने PPT में ऑप्शन दिया है। देन लास्ट में है ये हमारा कैलेंडर ईयर्स जो हमने देखा था, कैलेंडर वाइज रिटर्न्स, वो भी हम यहाँ पे PPT में देते हैं। लास्ट में है रोलिंग, रोलिंग का PPT, एंड देन कम्स द डिस्क्लेमर। लास्ट में हमारा डिस्क्लेमर है। सो बेसिकली आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे इस स्लाइड के बाद एक नया स्लाइड चाहिए तो आप यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक कर सकते हो और एक नया स्लाइड यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट्स जो भी डेटा आपको डालना है फ्रॉम इंजन मार्केट्स आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मतलब मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ।
Hello, sir, how you done a risk rating? Can you elaborate of this risk? Sure. You're talking about risk score, right? Engine fund Yes. score, risk score. Yes. So I'll explain that. Let's say we just load a older fund that way. Let's say we search for a fund, maybe iPro Blue Chip. I can explain that on a older fund that way. Yes. So this is a score that we give to every fund that is there on the platform. So we've just loaded iPro Blue Chip in a new page. So the major score is fund score. That is arrived by a combination wherein we consider and give AUM a weightage of 10%, and the 90% is distributed between the short, medium, and long term returns and volatility. And as well, we also have one qualitative parameter, which happens to be the age of the fund. So a younger fund will apparently have a lower fund score when we consider it to that of an older fund that way. Now, this was an explanation of engine fund score. Talking about risk score, risk score typically lets us see the volatility protection capability of every fund. So higher is the risk score, higher is the volatility protection of that respective fund. So we say all of these score, be it fund score, risk score, as well as the return score, all of them higher the better. And by higher, it is typically closer to 100, the better is it, the score, which is comparable within category, intra category comparison. And talking about return score for this as well, we consider the returns for each of the funds for the past 5 years. Basis that, we give a score which will be out of 10. And as I mentioned, higher the score, which is closer to 10, the better is it for all the three parameters. The question is that, ma'am, engine score is I understood Huh. because you have an age and you take a parameters of Hmm. age and AUM. But my question is that how do you arrive on a risk score parameter? What is Yes, the so the parameters being used? standard deviation is what we take for risk score, and for return score we take the returns for the past 5 years that way. Standard deviation is what we take for risk score. Okay, thank you, ma'am. Sure. Can you provide the recording of the same to us, ma'am? Yes, sure. So we record all our webinars, and this will also be uploaded onto our YouTube page by next week. You can Okay, visit our YouTube page. thank you. Sure. Hello. Yes, Yes. ma'am. Hi, Anshu. I'm Manmeet. Yes, yes. Yes, yes. Listen. So I had a query that Yeah. you've got a beautiful compare section where you can compare individual stocks and mutual funds also. Sure. Yes. So this is more of a feedback than a query. If you were to go to the compare tab, I mean, this is the compare tab, right? You Correct. just if you could just type one stock name, for example, Unilever or maybe ITC, for example. Yes. So I'll tell you what my query was, and possibly that would be under development at your end. Uh, Where is ITC? Yeah, so this is ITC. So now this tells you, so basically you can compare a standalone stock with possibly a Nifty large cap or with a Nifty 50, across all these parameters. Right. What I found missing was that do the returns, the CAGR or absolute returns, have the dividend impact or are they net of dividend? Right. So currently, we do not consider dividend as a parameter when we are looking upon stocks that way. Currently, we are under process of bringing a separate stocks portfolio, stocks platform that way. So we are Mm-hmm. working on that to bring a separate stocks platform. So that is work Yeah, under process, yeah. process So at the I'll tell you moment. and this could benefit the entire group. Why I'm telling is that when you study random Nifty 50 stocks, for example, 10 stocks, six or seven stocks fail to beat Nifty 50 or large cap mutual funds, even if you were to add the dividend in it. Hmm. But then Right. such an analysis is not present anywhere. Engine being a progressive platform, the way you guys been showing different parameters, helping us visualize. I think it is very imperative to also see that for those respective benchmarks, the stocks that fall in the different market caps. For example, Nifty 50, there would be barely 10 stocks that would have beaten a good large cap or a blue chip over 10, 15 years. But the fact is that not many are aware of this.
And hence, I started comparing individual stocks with mutual funds in their respective categories, where I realized that, most of these stocks underperform on a standalone basis, despite the fact that there was no dividend, even if I was to add an average dividend of 1.5 to 2%. So I don't know whether you all have thought about that or not, because this is the general query which comes to a lot of people who are into distribution advisory business, that what do we do of our stock portfolio? So hence, to engage with the client meaningfully, it is important to show that how do diversified mutual funds kind of perform versus individual stocks. So that was my feedback. Hi, this is Arnab. Yeah, thanks a lot for that. That's really useful. So we do actually, I mean, technically it's possible to do that, because in the compare section, you can add mutual funds and you can add a bunch of stocks as well in the same place. So you will be able to, let's say, have 4 or 5 mutual funds and then as many stocks as you like, because you can add any fund or any stock. What we don't currently have is, let's say, the 50 stocks in Nifty, and what those individual stocks are that make up that index. That information we're working on getting. But other than that, if you want to put a few mutual funds and a few stocks in here, you can already do that. No, I've Yeah. been doing that. Okay. Which is where I realized that a lot of Nifty 50 stocks fail to beat well Right. diversified large Right. cap. The only difference is the client might come back and ask that where's the dividend component in it. Oh, okay. That Okay. was Okay. Understand. so Okay. I'll tell you why. Typically what happens is, and this will help a lot of distributors of yours. Yeah. I have seen portfolios which have stocks worth 30, 40, 50 lakhs of a single company. Right. Okay. Now, to tell the customer that the stock is not worth keeping, for Yeah. example, Asian Paints, right? Yeah. Versus Nifty versus Nippon Large Cap. How do you Yeah. do that? When you've got such beautiful data, repository at your end, maybe a little tweaking here or there could help, kind of provide this complete suit, in the sense that for some reason, dividend is becomes very important when you talk about stocks, even if the dividend is at 1.5, 2%. Yeah. At the customer level, right? Whether rational or not is a separate point. Yeah. But then to complete the analysis, it is a dividend component, maybe an average dividend component over 10 years, 5 years, or the period that we select would help, rather than putting it each year, in the sense that, I mean, you don't need to Yeah. deep mine so much, is what I Yeah. need to say. So that was one feedback that I had. And Understand. second feedback is that if you don't, I mean, it's a little UI to do with much Yeah. to do with UI, because I have been managing websites for donkey years now. If Yeah. you don't log out, now don't ask the customer to log in. How do you So mean, sir? If you could if I just use your elaborate. app, if I use NGEN Yeah. and I minimize it, or if I Mm-hmm. close it, Mm-hmm. right? I have not logged out. So Right. what happens is, when I again open your app, after 10-15 seconds, it kind of tells me to log in, and by the time I've filled two funds in the compare section, either prompt me the moment I click on your website, or Right. don't prompt me if I have not logged out. It is actually a Understand. minor issue, but a major irritant. I'm telling you. You feed two funds, and suddenly it throws you out of the website. Ki log in karo pehle. Sure. So why don't we show you something here? Ansu, can you go to the settings and just show that one-click link? So for kind of certain security as well as multiple user issues, Yeah. we had to keep logging out. But if you want, in your login, if you go to this area, you'll get a permanent link here, which obviously you Okay. need to keep safe and not share. And basically, if you save that as your favorites, every time you click on it, it'll automatically log you in. I think I've done that, because I saw this the moment I got your software subscribed. I Right. don't know. I'll try it again. See, I've for seen example, this. here you can see Okay. Rohan. Sorry, I thought it was Ansu. Rohan is just automatically logged in with that. So he could, for example, just save it in his bookmarks bar on the top. So once you do this, you'll never have to log in, because you just have a little link on your bookmarks on the top. You hit it and it'll just log you in instantly. I'll try it again. I have Yeah, seen please. this, and I'll try this again. Thank you so much. Yeah, I'll try no this problem. again. No problem. हेलो हेलो Yes. मैम कुछ मेरी भी क्वेरीज हैं। वो पहले जी। कुछ क्वेरी थी जो कॉमन थी, प्रीवियस में कुछ एड्रेस हो गई हैं। ओके। सेकंड मेरी क्वेरी है, जो डैशबोर्ड है इसमें, जैसे नेक्स्ट निफ्टी 50
मिड कैप 100 एंड स्मॉल कैप 100 लिखा हुआ है। अगर मुझे इसकी बजाय मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250 को इलेबोरेट करना है तो कहाँ से पॉसिबल होगा वो? ओके, सो उसके लिए दो ऑप्शंस है। फर्स्टली अगर आपको उसको लाइन चार्ट पे लेके आना है तो आप सिंपली उसको यहाँ से सर्च इंडेक्स वाले सेक्शन में आप सर्च कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं लाना, डैशबोर्ड में ही उसको हाँ, ओके, रिप्लेस करना। अंडरस्टैंड। सो डैशबोर्ड दैट वे स्टैटिक रहता है, यहाँ पे एडिंग या रिमूविंग पॉसिबल नहीं है, ये स्टैटिक रहता है। आपको उस पे एनालिसिस रन करना है तो आप कंपेयर सेक्शन में लोड कर सकते हैं या ये चार्ट सेक्शन में आप लोड कर सकते हैं। तो मैडम मेरा फीडबैक है कि आप इसको ना चेंज करवा दीजिए, क्योंकि मोस्टली जो फंड्स के बेंचमार्क हैं वो निफ्टी 150 है और स्मॉल कैप में वो 250 वाला फंड आता है। तो चीज़ों को देखने में ना थोड़ा सा कंपैरिजन का अपना कंफ्यूजिंग हो जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे सर एक क्वेश्चन है, अगर हम इसको कस्टमाइजेबल बना दें तो उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस होंगी, मैं आपसे बस पूछना चाहता हूँ कि वो ठीक है कि नहीं। ये आप जो इसको रिप्लेस कर नीचे, दें जो हमारे बेंचमार्क हैं, क्योंकि हाँ हम जी, उसी को देखते हैं, तो अगर वो बेंचमार्क ही आ जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। अगर हम ये नीचे के जो छह हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 से लेके जीबीपी आईएनआर तक, इसको हम कस्टमाइजेबल बना दे कि आप एक बार चेंज कर दीजिए तो अगली बार लॉगिन करके वही दिखेगा। राइट, इ- वो इ- ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, या लेट्स राइट दिस डाउन इन आवर ठीक है। अपकमिंग मेरी रिलीजेस। या सेकंड क्वेरी है, एक ना हाँ जी। स्टॉक में सर्च कीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे ईआईडी पेरी। सॉरी, स्टॉक्स आप बोल रहे थे? ईआईडी पेरी, कोई ओके, भी लिख लीजिए, कोई मतलब कहने का मतलब है कोई भी स्टॉक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये ओके, द सेकंड 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 वन, सेकंड सेकंड वाला। वन। अब बेसिकली मेरी क्वेरी क्या है कि यहाँ पे स्टॉक के ना आपके जो एनालिसिस हैं वो बहुत ही मतलब जो बेसिक वाले अवेलेबल होते हैं ना, जैसे पी उसका क्या है, बुक प्राइस क्या है, वो एक तो यहाँ पे वो सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, इसमें ये चीज़ मैं चाहता हूँ अगर पॉसिबिलिटी हो कि जैसे हमने एक स्टॉक लिया, उसका किन किन म्यूचुअल फंड के पास कितना कितना होल्डिंग है, यस, सो आपका जो वो सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं दिखता। जबकि म्यूचुअल फंड की स्कीम्स का जो फैक्ट शीट है वो हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सब कुछ एक एक स्क्रिप्ट दिखता है उसका। यस, सो आपका टिपिकली सेकंड क्वेश्चन ये था कि कौन से म्यूचुअल फंड एक स्पेसिफिक स्टॉक को होल्ड करते यस हैं, इज व्हाट यस यू वांट टू। यस यस, यस यस वो बिल्कुल। हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप फंड्स टैब पे चले जाइए ओके। और यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस करके एक ऑप्शन है। अच्छा। यहाँ पे इक्विटी होल्डिंग करके तो थर्ड टैब है होल्डिंग एनालिसिस में, आप यहाँ पे आ सकते हैं एंड यहाँ राइट, पे आप आपके स्टॉक का नाम पुट इन कर लीजिए। चलो। ओके, राइट, ठीक है। ठीक है, वंस आप वो पुट इन कर लेंगे आपको लिस्ट मिल जाएगा कि कौन से म्यूचुअल फंड्स वो रिस्पेक्टिव स्टॉक को होल्ड करते हैं, लेटेस्ट दैट वे। ओके ओके, राइट, या और आप इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। परफेक्ट, ठीक है, राइट राइट, So, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू मैम। Madam, yes, sure. one small query. Okay. Yes, yes, Can you go to statement analyzer? yes. Okay. Here, like, no, the file AUM it is showing, right? For example, 21.4, 32.98. Correct. Okay. So this is when the date of no uploading the data, this was the AUM, right? Correct. Your file AUM, meaning the cache that you uploaded had this AUM Yes. triggered that way. Yes. So generally, like, no, the customer, for example, like, no, let's take IDC, ICICI, HDFC and all. So daily the value will get changed, right? Yes, we will anytime capture the latest NAV or the latest price of every component that is there in your portfolio. No. See, So for example, like, no, let's take yesterday, the file AUM was, let's say, 21, 2nd April, 21.14. Okay. Huh. For Right, example, Chinmay Mondal. right. Okay. So 2nd April, the 21.14. But today will be different, right? yeah, so hi, I can just so firstly, this statement analyzer section is it's just a temporary place from where you can save portfolio. So my suggestion would be, once you upload a file here, this is just a list to show your files. You can delete this also once you're done. Okay. But Okay. my suggestion is go to the client section and go to manual data. And once you've uploaded it, you add this client here, add single client, add from statement analyzer. You can Okay. basically pull that file data that you've got Okay. in the statement analyzer by clicking this plus button. Okay. And that client will now be created in your manual data section and will be there forever. Now, Okay. So this will be in the keep on changing.
Of course, yes. This will always show you latest value. So if you come here and load that portfolio 3 days from now, that number will be reflecting the latest prices of each of the funds or stocks that you have in there. Okay, but this will not happen in portfolios. No, because see, the portfolio section doesn't really look at rupee value at all. That is a kind of a research area, which everything is percentage based. So in the portfolio section, if you run anything, you'll see, just go there. Just go to you can see there are no rupees, crores anywhere, right? This is all percentage based. So if you want to save values and track the values, the client section is where you should go. Here, everything is basically, percentage based. We are not looking at money at all here. Everything is, No, I'm asking the yeah. percentage will get changed here. No. This percentage will be stuck at whatever it is. So in the client section, it will change based on whatever the AUM is growing at. Okay. So in the portfolio section, it will be fixed because that's a place where you enter, I want 60% in this fund, 70%, 20%, 10%, whatever you want. That will remain static because this is like a research area, the portfolio section. The client section, data will be updated on a daily basis as the new prices come in. Okay. And one more thing, the start date and end date is there, right? For example, let's take the portfolio. Okay, client would have been invested in 2005 or 2010 or 1995 or 2010. So which date it will take actually? If you are mentioning since inception, okay, all the funds will not be since inception, right? So how to take the data? So obviously this, as you know, is a back test, right? So when you do a start and end date, you're right that some of the funds may not have launched in, let's say, 2015. They only launched 5 years later, right? Correct. So there are two options here. If you look at this rescale weights option here, which we recently added, in fact, because some people asked for it to solve this problem. So there are two choices. Let's say you have a portfolio of 4 funds and one of those funds was only launched 2 years ago. Okay. Right? And if you're running a 5-year back test, one of your funds will only have data for the previous 2 years, not the first 3 years. Right? Correct. So here in this, if you have said yes, then what will happen is our system will automatically increase the allocation of the first 3 funds in order to take up that space that is missing for the first 3 years. Okay. Right? And then as soon as the 4th fund becomes alive, it will go back to its normal weightage and continue the backtest. If you click no here, then what will happen here is it will not increase the first 3 funds. That first 3 years of the 4th fund will remain with a 0 return. So whatever returns you get will be obviously lower, right? Because that whole entire period you were unallocated. So as a user, you can choose what you want to do. And if you always want this to be set to yes, for example, then in the settings area, you can actually set it as your default setting. So every time you're running portfolios, it will always rescale the weights. Okay. It is set to no by default. And the reason it is set to no is because when you're running the backtest, the first 3 years of the backtest will actually be a backtest of 3 funds only, not 4. So for some people, it might be misleading because even though it's looking like a 4-year four fund backtest, it's actually a 3 fund backtest, then a 4 fund backtest. Correct. As long as the user is aware that, I know I'm doing this, so you can set it to yes, but you'll have to manually set it first. And after that, it will continue as a default selection. Okay. See, one more query. Okay, where we can see the value of the each individual. For now, we are saying of the percentage, right? So here in this software, we don't see any values in the each single client section. If you added it in the manual data, like we just showed you before, here you can see units column, and then right next to is the value column, and that value is based on the latest price. Depends upon the units into current NAV. Exactly. In fact, when we save this data, the units column is what we save as static, unless you change it yourself. This will never change. The value will continuously change as the price changes. Okay.
And one more thing, see, Yeah. you are having it like, this monthly SIP and monthly SWP. Do you have an option called monthly STP? Options, we have anything here? No, we actually haven't developed a STP tool yet, but that is, in our list. So we will get to it as soon as we can. Currently, we're only providing SIP and SWP. Okay. Yeah. Sure, sir. Thank you. Thank you. Excuse me, sir. I have a question. When we do a comparison of the funds, okay, when we run the funds between existing portfolio with the organized portfolio, that funds, that data doesn't get saved, whenever you want to retrieve the data. Can we, because every time, when we go compare portfolio, yes. So portfolio 1 and portfolio 2, suppose we made one portfolio of the client and we made one more portfolio of our own. So when we do this scaling and etc., and after doing, either we have to take a PDF printout, or no, can we put out something like that which can be saved so that, time and again, whenever we can go back and to the client, something like that? So you want to be able to save the comparison. Yeah, this. So the thing is, this comparison runs on the fly. So we can look at ways of saving these two, but effectively, what you'll be saving is the names of the two portfolios. Because the analysis, even if we save it, if you load this comparison again, it will run these two just like it is run right now. You want to be able to save the two names together so you can load them without having to look them up. Is that the question? The question is this: what happened with my case? Like, I did one analysis with the existing portfolio with the comparing portfolio. Okay. Yeah. And after some time, I couldn't able to meet. Then, after 10-15 days, again, I forgot which comparison I did it. Means there are many Right. names comes, who is that, which portfolio I compared with the existing portfolio. So if you named it some and it got saved or something like that, so it will be easy for us to, just take a printout and, go to the client meet. Again, you have to put a lot of effort to do the same comparison. Understand. I think maybe one way we can solve this problem is that we have actually developed something where we keep a history of your actions, which you can go back to, like a log of your usage. Maybe that will help. So, just give us some time. We'll try to see, what we can do to help with that Understood. particular But sir, issue. basically, no, see, if now your 145 numbers come from company, I have compared it with 130 or I have compared with 145. Yeah. Every time Fair enough. different funds and Yeah. time getting unnecessarily consumed, Of course. So that is the reason, sir. Understand. We'll try to figure something out for this. It's so kind of you, sir. Thank No you. problem. No problem. Hi, sir. Hello. Hello. Yeah. Please go ahead. Sir, in security, this thing you showed one link where we can log in without using user ID and password. So if we change the password, so then it will get that. Will the link get changes? Yes. You have to if you change the password, you will have to let's go back to the security place again. Actually, Rohan, can you just generate the link? Just generate one right now. Okay. Fine. So you see that get a new one-click login link. So if you change the password, you will have to just click this button again and then save the new link. Okay. And one more thing, when we open, for example, if you take any scheme, so in that portfolio, you will show as two things. One is a portfolio, this thing chart actually. So in that you will show as NGEN rebased index. So what is that NGEN rebased index? Let's just go to the portfolio again. Or else you can go to any fund. Okay, sure. Yeah. So in the benchmark, you can see that NGEN, right? Oh, I see. Okay. So those are basically we have just given you some options. It's it's for you. You can use it or you can change it, whatever you want. But what we've done here is with reference indices, just click on it. Yeah. So we basically auto created 11 indices for you, which you may or may not use. It's up to you. By default, it just picks one of them. But as you can see there, 100% Nifty, which is basically Nifty, or then 90% Nifty, 10% bonds, 80% Nifty, 20% bond, and so on, all the way to 100% bonds.
Okay. right? So Oh, if yeah, you want to have a just, generic oh, benchmark, basically, right? So that's you like, can use it, or you can choose oh, something else. okay. So in the first option, actually, Nifty Mhm. TRA, you are given as Nifty 50 TRA or Say so. Nifty 50, everything is Nifty 50 Oh, TRI. it's Nifty Yeah, 50. yeah, Okay, fine. And one more thing is, yeah. we are facing a login issue where Mhm. in one system it's not working. Actually, do we need to clear the cache and we need to log in, or how? Uh, uh, are you using Google Chrome? Or Yes. yeah, okay, you're using Google Chrome. And if it's not logging, just drop us an email. Somebody will call us and do an AnyDesk and sort it out. It should Okay. not be a problem. If you could Ah, just drop your name or email address in the chat here, we can get in touch with you. sure. Thank you very much. No problem. Sir, one more query. Okay. Go ahead. Yeah. Just run in. There is a option called improve, right? Yeah. Okay. Just go to improve. Okay. Yeah. So here, just go up, sir. Just go. So here, like no original portfolio, the returns is around 19.86. Mhm. Okay. So under rank returns, first one is a 21.22. Yeah. So here only you're telling only to reduce the or increase the allocation in the existing portfolio only, or Yes. we Yes. can change the entire scheme itself. For example, like no, let's take SBI multicap is not doing well, so Mhm. probably we can reduce the entire exposure and we can add another scheme. Is that Right. improve option is there, or only allocation So option? yeah, so we do have something which is a bit different. So we are not taking your existing portfolio and then switching the funds. If you want to get recommendations, or basically algorithmically driven ideas for portfolios, Rohan, just go to the pro strategy section. So what we have here is, yes, close this. Yeah. So what we have here is, portfolios that are built using our algorithm. So there is no manual input. So, Ansu, Rohan, or me, we are not saying which funds there should be. This is completely algorithmic. Okay. And you can see here that, this is an aggressive growth portfolio. Okay. So there are various different strategies that are available. And if you want, you can use them. You can edit them. You can easily take them to the portfolio section and edit them if you want, or you can use them as it is. And this is mostly kind of based on performance, obviously, and the NGEN fund score is the main driver of these portfolios. So if you want direct ideas of kind of which funds, direct ideas to help you kind of decide which funds you want to use to create a portfolio, this is Okay. where I would suggest you can have a look. Okay, so you don't have any option which we can compare the existing portfolio. From there, we can remove and we can change the new fund. That kind of option is not there. Well, it's there because you can easily put the existing portfolio Where we against can put one the of these existing strategies. portfolio. How So, to so do that? basically, Rohan, if you have any of these strategies saved, you just go to the portfolio compare, and yeah, so just pick anything. Okay, so this one, for example, this portfolio is the one that the NGEN algorithms have come up with. So what we can do is we can go to the portfolio compare section and compare any kind of given client portfolio. Let's say, fine, existing portfolio on the left, and on the right, just load that aggressive one that you loaded right now. So in this way, what you can do is, take an existing portfolio on the left-hand side of any client portfolio and put one of the, NGEN portfolios, if you like them, on the right-hand side. And then you can kind of print this out and take this to a client that this is what you have on the left. And what I'm suggesting is what you see on the right. Okay. So like this way. Okay. Yeah. Got it, sir. Thank you. No problem. Sir, I just missed it. Are there inbuilt engine portfolios? Sorry, go again, please. Are there inbuilt engine portfolios? Yes. So these that what we just showed you is in the NGEN Pro section. The first tab is strategy templates. So these are algorithmically created. Every month they are rebalanced. You can see the latest rebalance was the 31st March. So every month end they are rebalanced on the month end data, and various different funds, various different portfolios here. So you have asset allocation here. You have equity. So these are pure equity aggressive funds. So it will obviously
we're picking, quite a lot of risk. NGEN Pro is a new tab that's added. That's right. So we released this in December last year. And it has other features like financial planning and So risk what are the profiling as well. funds under the aggressive growth portfolio? Where do So you let's check that? just open it up. So again, you don't, obviously, this is an example that comes out of our algorithm. So you might take this, edit some of them, maybe a couple of AMCs you don't want to work with. You can take them out, put your own one in, replace that. So it's like a starting point for you to create a portfolio, basically. So how is this weight allocated? On what basis? So various things, we look at various things. So obviously we look at how long the fund has been going for, the AUM, but the main driver is the NGEN fund score. As you can see here, the scores are quite high. So the this main will driver obviously avoid the new funds, correct? It will most likely avoid new funds, exactly. And that's where you will have to manually intervene to add something if you are, aware of very good funds that have been launched a year ago, that you will have to, kind of manually add it in. What we've got here is, funds that have excellent long-term stable performance will feature in this list, basically. But isn't this too many funds for a portfolio? Well, I guess we have to draw a balance somewhere. I agree, maybe it's too much, but, generally speaking, 5 to 10 funds seems like the most used kind of number of funds in most of the portfolios that we have. We have thousands of users now, so we also we can get an idea of the number of funds people usually like to have in a portfolio. So, about 5 to 10 funds is what we currently have. But we might actually, it's not a bad idea. We can probably create a set of portfolios which are only 3 or 4 funds. I mean, from your perspective, what is the correct number of funds from your perspective that you would want in a portfolio? Okay, try to restrict it to 6. It is difficult, fine. Yeah. So I mean, it's actually not a bad idea. Guys, just let's write this down. Maybe we can add a few kind of funds with maybe maximum 6. Which users might find it useful. And every month by rebalance, what do you mean? You rebalance within these funds, or you remove funds, add funds? We remove, add everything. So basically, this every month end, the algorithm runs. So for example, I mean, I'm unable to tell you exactly the algorithm right now, but for example, if you go to aggressive equities, just close this quick view for a second. Aggressive equities. So this one, for example, just close the quick view. Let's okay, we haven't mentioned the SEBI categories here, but generally speaking, it will look at large cap funds, small cap funds, mid cap funds, and a couple of other categories, and only choose from those categories. So obviously, the aggressive equity fund strategy will not consider several other SEBI categories which you might consider otherwise. So one of the ways that the funds differ is by the selection of categories. And then secondly, after that, the fund score is running. So, but all these filters are 100% kind of algorithmic. So what happens is at the end of this month, we will run the algorithm again, on 30th April or 1st of May. And then a new set of funds will arrive. So right now, the upper limit is kind of 10. So for most portfolios, you won't really see a number above 10. So that's how, so this is a completely automatic system of creating portfolios. So this took care next in like the same question. Yeah. When every month you rebalance the portfolio with new funds, typically a mutual fund distributor, as we sell the funds, we cannot change every month the client's funds, and that becomes very difficult. Of course. And so so the biggest thing when you suppose I've been subscribed to this strategy, but I find it last month it was one fund and this month new fund. I cannot give that to my existing fund. No, sir, this month this algorithm was good. Absolutely, no. Absolutely, you're right about that, right? You can't keep changing your entire portfolio every month. That you're absolutely right. So from on one hand, we obviously want to keep giving our users the latest information possible, right? Now, so I mean, this is obviously in conjunction with you. We are not an advice giving platform as such. So we are not telling you that this is the right portfolio. We're obviously running through a bunch of algorithms and giving you an answer as a result. But my suggestion is that you look at this
at the time that you, let's say, an onboarding a new client. If you have model portfolios, you can keep an eye on the changes, and you may agree with some of them, you may not agree with some of them. So it's a nice kind of thing to track in terms of what is the fund score driven portfolio saying right now. But from our side, we do feel that we should continuously update them. And you're right. I mean, it's not something you can, it's not something we don't even suggest that you blindly follow at all. But it's something that is, updated on it's like a kind of a list, basically, portfolio weighted list, basically. One more thing to add to here, sir, I had given one feedback to Madam Anshu, like regarding about the query section. You have a filters, right? Yes. Risk factors, and I placed one more request. Rather than you engine scorecard, you place here one more column that is a risk factor. So that will help us to draw down more filter data coming into the picture. Like, if you select engine, the scorecard comes of engine. The further add to one more thing, add one more filter to a risk factor. So that makes life very easy also to short down the list of funds. Understand. No, this is, I'm pretty sure this is already on our list. So just bear with us and we will definitely get this done. Just below NGEN Fund Score, once we release it, you will see NGEN Risk Score and Return Score. All three will be there. Yes, so once it is done, sir, it makes very easy for us also. Okay. Of course. 3 parameters, 1, 2, 3, best fund, got it fund, and just bang on. Of course. Yes, absolutely. Thank you very much, sir. No problem. No problem. Any other questions, please let us know. Okay, guys, if there's nothing else, we can close for the day. Thank you everyone for joining. If you have any questions, any query related to NGEN Markets, you can just click on this knowledge tab directly, and you can connect us via email, which we have given on our knowledge tab, as well as the landline number which we have given. You can directly call us here on the landline number, and the webinar which was conducted today will be uploaded next week on our YouTube channel, which is on the top here. So you can get all our webinar on this particular YouTube channel. Thank you very much. See you in the next webinar.